शिला प्रभात की जय। ओम अज्ञानतिरंधस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथपितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सैगन ललिता श्री विशाखा विशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्व कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी परमानी परमाणि हरि प्रिय वंशा कल्म तरुणस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इतना ही है ना? आई थिंक पूरा हो गया ना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप म्यूट है माता जी, आप म्यूट हैं। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। For Mangalacharan. So I think we can start this new roster on who will do Mangalacharan for each class. And I would humbly suggest for the next 1 month, Vinu can do the Mangalacharan. Sorry? For the next 1 month, Vinu can do the Mangalacharan for the whole month, all the 4 classes. And after that, Neha. So we can post, when you post for the class, Bhagavad Gita class at 4, along with that, we can mention Mangalacharan, Vinu. And like that, everybody's turn will come. Okay? So everybody has done the homework? Yes, yes. थोड़ा थोड़ा 20 to 23 is very difficult. बिल्कुल बहुत कम समझ में आ रहा है। हाँ, उसमें कुछ चीजें हैं जो we need to understand. Yes, I was referring more to the lecture and making 2 points from that lecture. That part is done by everyone. How many? half of the lecture. Excellent. Okay. So before we start Bhagavad Gita, let us discuss 2 points about that lecture, because that has a relevance to the chapter 6 yoga that we are doing, right? As we saw in the last class, that we are discussing, Krishna is discussing yoga with Arjun. And yoga means to do something. Mostly yoga means to control your senses. To control your senses, to control your mind, automatically the senses get controlled, or vice versa, control your senses and the mind gets controlled. And once your mind is under your control, then it doesn't matter whether you're in the material world or the spiritual world, because you're always spiritually blissful. Because it is the material world, the mind and the senses, which is agitating us and robbing us of our peace right now. तो अगर आप न्यूट्रल हो जाते हो टॉर्टोइस की तरह, अपने लेग्स और आर्म्स को शेल के अंदर विथड्रॉ कर लेते हो, ये एग्जाम्पल भी दिया है कृष्ण ने गीता में. तो द हैमरिंग, इवन इफ एन एलिफेंट स्टेप्स ऑन द टॉर्टोइस, आई थिंक द शेल डजंट ब्रेक. It's able to take the weight of the foot of an elephant also. So इस दुनिया में रह के भी वो इम्यून है इस दुनिया की प्रॉब्लम से. उसी तरह if you're able to control your mind and your senses, your desires, your expectations, then unhappiness or distress or anxiety cannot touch you. So
इसके लिए practically हमें क्या करना है? I found that lecture very suitable to what we are studying right now in Bhagavad Gita. Hence, I linked it with these verses that we are doing right now towards the end of chapter 6. So I guess Vinti will not be able to be here for long. Is that correct, Vinti? So we'll start with you. No, I will be there for whole 1 hour. Okay, wonderful. All right, so everybody can take notes and jot down the points that are being discussed by the others. So there are how many brains at work? 9 brains at work. So Vinti, beginning with you, what are the 2 points, practical takeaways that you got, which you can start applying in your life with immediate effect? Yes. Hare Krishna. 2 points that I have taken from this, which is very relevant also, which is very helpful in Krishna consciousness. 2 points is that if we really want to progress in Krishna Bhakti, it is through our lifestyle that we can rise towards higher level, that is towards Krishna. Lifestyle means what I have understood is to be a minimalist, that is न्यूनतम आवश्यकता है कि जिस वही आवश्यकताएं हम पूरी करने की वो करें सिर्फ जिसके बिना हमारा काम ना चल रहा हो, जिसके बिना मतलब बेसिक जो कहते हैं बेसिक. Oh, she got disconnected. So the one point that she is saying is minimum requirements. Nyunatam. Keep your life simple. Because if you have a long list, you have to work that much harder to first accumulate it. Hello. Sorry. Yes. I think there was some network issue. I got disconnected. No worries. We can hear you. I was just saying that minimalist lifestyle is what is the key. और जो हमारा सेंटर है लाइफस्टाइल का, अगर पॉसिबल है तो जैसे गाय से और लैंड का जो कनेक्शन है, दैट इज इफ वी रियली वांट आवर लैंड्स टू बी फर्टाइल, और जो हमारे वाटर की प्रॉब्लम है, इतना सब कुछ है जो वो भी गोधन जो है, जैसे हम और उसके लिए हमें जो फंडामेंटल्स शास्त्रों में दिए गए हैं कि कैसे हमें खाना चाहिए सीजन के अकॉर्डिंग, सीजन के हिसाब से, दैट इज वी शुड नॉट हैव मिल्क इन सर्टेन मंथ्स बिकॉज ड्यूरिंग दोज मंथ्स इट इज मेंट फॉर काफिंग इज दैट. तो ये वाली चीजें बेसिकली हमारी लाइफस्टाइल शास्त्रों के हिसाब से होना चाहिए. हमें शास्त्र गाइड करते हैं उस तरीके से रहना चाहिए. एंड आवर अल्टीमेट एम शुड बी, वो तो हमारा कृष्णा भक्ति है, तो मतलब लाइफस्टाइल भी हमारा वही होना चाहिए. दिस इज व्हाट आई हैव. Thank you, Vinti. So if I may summarize what you said, your 2 points was keep your lifestyle simple and your requirements to the minimum, and eat according to the seasons. Yes. Because अगर आप सीजन के हिसाब से खा रहे हैं तो आप मदर नेचर पे बोझ नहीं बन रहे और उस पे स्ट्रेस भी नहीं डाल रहे हो. And if you are in sync with nature, then you are not adding to any. For example, हम अभी बहुत स्ट्रेस डाल रहे हैं. अगर हमें ऑफ सीजन कोई फ्रूट खाना है तो इतना पेट्रोल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उस ऑफ सीजनल चीज को आप तक लाने के लिए. So that's a burden we are causing. In fact, I was hearing a very nice lecture by Bhakti Vikas Swami. He was saying, ये जो वॉशिंग मशीन आपके घर पे चल रही है, आपको लग रहा है बहुत सुख है, घर घर में वॉशिंग मशीन है, कपड़े अपने आप धुलकर वापस आ रहे हैं, आपको पता नहीं है आप इसके लिए कितनी बड़ी कीमत अदा कर रहे हो. You think it's just a few thousand rupees, and no, you are paying a very big price for that little sukh कि वो मशीन आपको कपड़े धोके दे दे. पुराने जमाने में, पुराना भी क्यों, रिसेंट जनरेशन तक अभी तक अपने कपड़े खुद धोती है रोज के रोज. So he was giving examples that if you see all the affluent families today,
Then the wife is having an affair with someone else while her husband is busy making money. And दोनों के कपड़े wash होकर आ रहे हैं washing machine से, but the husband does not realize that, you know, his wife is unfaithful to him, and the children are also not being well taken care of, because both the husband and wife are busy with their own pursuits of money making and merrymaking. So everybody's paying a price just for maintaining that lifestyle. You know, children are being neglected, wives and husbands are having their own extramarital affairs, and both of them are foaming at the mouth to earn that money to be able to maintain those gadgets and those servants in the house. Now, what to speak of the resources of Mother Nature? So, if we are leading luxurious lives today with heaters for winters and air conditioners for summers, he opened our eyes that don't think there are no free lunches, and we are paying a price for this. This is going to come back to us in some way or the other in future. Mother Nature also does not give any free lunches. Whatever we take from her, we have to pay back with interest in some way or the other. Okay, so moving on to Anjali. Anjali, आप बताएंगे? Thank you, Vinti. What I could feel was, I've Sure. just written it down. I'll just read it. Uh-huh. हेमा, आप लिख रहे हो क्या? नहीं, अच्छा. The first takeaway was that Krishna's planning and timing is perfect, totally impeccable. It is something that we should not have any doubt about. Matlab, he will give us exactly what we need, not what we want, and in exactly the quantity that we need, neither less nor more. He makes the summers so hot, but usi heat se we get those cooling fruits like Prabhuji mentioned, mango, watermelon, muskmelon. They all are needed to cool us down because of the heat. We enjoy those fruits, but we still don't stop complaining about the heat. Or that whiny thing is always there in human beings. We keep complaining, we enjoy the fruits, but we still keep complaining. Also, we should not interfere in his planning and execution. Matlab, if he, after a very severe summer, clouds form and rain comes down, and then we try to control that water also by making dams and everything. Floods happen only because dams have been created. And rather, Prabhuji mentioned somewhere in Europe now that they are going to give up construction of dams and all Already, yeah, already given up. Already given up. So like it's high time we also started following that example, and we have basically to stop interfering, stop meddling in Krishna's planning and have faith in his planning, timing, and go along with that. And secondly, prime duty to give back to Mother Nature. We are using her resources, and we should give back also. Usme he mentioned about, like Vinti mentioned, those particular seasons. We should not eat greens because the cows are meant to eat all those greens. He was talking about Chaturmas. Then we should not drink milk in the second month because the calf is supposed to take that milk. We are, depriving the poor calf out of her share. Similarly, yogurt. So I guess all in all, it is learn to have complete faith and trust his timing and planning, Krishna's. Thank you. I Thank you. think that, Yeah. So Chaturmas makes Yes. sense now. yes, now it makes sense. Anna, it's not something superstitious or something emotional or sentimental. क्यों हो हमें गायों से बड़ा प्यार है या कृष्ण ने बोला है I want to become very pure. That's not it. That's not the whole story, not the whole picture. The real picture is that everybody takes only his quota, allotted quota,
and leaves the rest for the rest of your brothers and sisters, which include animals, birds, beasts, reptiles. सबने यहीं से, इसी वनस्पति से सबने अपना पालन पोषण करना है. So we can't grab another's share. So greed, as Srimad Bhagavatam says, हर चीज का इलाज है. Thirst, hunger. Thirst can be satisfied with water, hunger with food, loneliness with love. And finally, the Bhagavatam verse says, but greed has no cure. It cannot be satisfied with anything. The more you feed a greedy person, the more greedy he gets. इसका कोई इलाज नहीं है material world में. हर चीज का इलाज है. नफरत का, रिवेंज का, एनिमिटी का, भूख प्यास का, सबका इलाज है. ग्रीड का इलाज नहीं है. And greed will be like a dominoes effect, will ultimately destroy, which is exactly what's happening to our planet today. All the individuals are consuming the planet at a rate faster than the planet can recover. And they are consuming it only so that their business can be successful. There's greed. हमें चाहिए नहीं इतनी सारी चीजें, लेकिन बना रहे हैं ताकि business में नफा हो. And therefore it is destroying our planet. So it's very, very practical. Thank you so much. Who wants to say next? Neha? Yeah, so most of the points are like quite similar, but what is my take with the verses is that a yoga practitioner, you know what, if he pursue the course with great determination, he can get success. Now, the thing is that how to progress in Krishna consciousness and how to put mind at peace. So in 6.25 or 26, it is said that if you serve Krishna with purified senses, that if you follow all the regulative principles and you serve Krishna, then you can become, then basically you are in Krishna consciousness. And here in this lecture, Prabhuji also said that everything, you know what, if you want to progress in Krishna consciousness, then everything is written in Bhagwad. Bhagavatam is already stated, you know, like these people said that you don't have to eat in Chaturmas, you don't have to, you know, you have to in summers, you know what, we are getting a lot of mangoes and watermelons. So we are getting mangoes as per the season. So the thing is that what he's trying to say is that we have to make cows as the center of a life. We have to do service to the cows. So if we do more service to the cow, we are basically doing more service to Krishna, and then indirectly we are there in Krishna consciousness. So that is how we progress, and that is how it is all linked. Yeah, so cows should be the center of our life. And what was the other point that you said? That one thing which I really liked is that if you serve Krishna with all the purified senses, then you are basically in Krishna consciousness. Because this question is asked again and again, that what is Krishna consciousness? What is Krishna consciousness? And every time somebody's asking me this, I get confused. I don't have the answer to this. So I found the answer in 6.26 or 6.25, where it says that if you are serving Krishna with purified senses, that you are following all the 4 regulative principles, 4, 16 ऐसे कुछ था ना, अगर आप follow कर रहे हो, तो basically you are in Krishna consciousness. Thank you. Yes, that was nicely summarized. 4:16.4. क्या था वो? सुबह 4 बजे उठना, 16 माला करना और 4 regulative principle follow करना. That's right. And that's Krishna consciousness. So now we know the practical reason behind all these rules and regulations, correct? सुबह क्यों उठना है, 16 माला क्यों जपनी है, right? चतुर्मास क्यों रखना है, एकादशी क्यों रखनी है. Our very existence depends on these rules, actually. And none of them we can say कि इनकी जरूरत नहीं. इनका direct impact है हमारी happiness quotient पे. Okay, thank you, Neha. Who wants to go next? Yes, Preeti. आपने सुना है lecture? You are muted, Preeti. सॉरी माता जी, मैंने 2 बार आपका क्लास में सुना है क्योंकि मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, तो क्या? जो मुझे
लेक्चर जो है ये मैंने जो सुना। हाँ हाँ, तो जो मेरे को समझ आया, मैंने लेक्चर सुना, एक तो ये कि हर चीज हमारे लिए जो है वो भगवान ने तय की हुई है। मतलब खाना पीना सब जितना हमें मिलना है वो हमारे लिए है। हमें दूसरी बात जो मुझे समझ आई जो है कि जैसे दुर्घटनाएं हैं, आपने कहा अभाव है, हमारे अपने प्रियजनों की जो मृत्यु है या ऐसी कोई भी जो चीज है जो हमें डिस्टर्ब करती है जी, है ना, इसमें अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति में रहते हैं तो वो हमें सहने की उसमें शक्ति मिलती है। हमें हमारा मन विचलित नहीं होता है, हम परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि जब ऐसा इतना आसान नहीं है, पर चूंकि हमें लगता है कि एक भगवान का ये सब भगवान की ही के द्वारा किया गया है, जो भी है वो हमारे लिए इस तरह से बनाया गया है, तो हमें उसको। आप म्यूट हो गए हो प्रीति। नहीं माता जी, म्यूट नहीं हो। अब ठीक है। हाँ जी, ये है। और दूसरा जो मेरे को समझ आया जो मेरे को लेक्चर में, ये कि जैसे आप लोगों ने कहा कि हर हर मौसम हर चीज इतनी परफेक्टली भगवान ने बनाई है और उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, जैसे कि अंजलि जी ने कहा कि गर्मियां हैं तो उसके लिए फल बनाए हैं, तो जो सीजन के फल है वही खाएं, है ना। सर्दियां हैं उसका अपना अलग हिसाब है, उसके लिए अलग गर्म चीजें बनाई हैं। अगर हम इस तरह चलते हैं और भगवान के दिए हुए निर्देशों के हिसाब से, सुबह जल्दी उठना है, 6 घंटे की नींद होनी चाहिए, इतना आहार खाना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, अगर हम इस तरह भगवान के बताए हुए नियमों पे चलते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हम कृष्ण भगवान की भक्ति में आगे निकलेंगे और हमें वैकुंठ धाम भी प्राप्त हो, जो हमारा अल्टीमेट गोल है जी, ये है। और जीवन में अगर परमात्मा का कोई अगर आनंद अगर हमें लेना है, वो परमात्मा के चिंतन और भगवान का ही जो आनंद के लिए जो कामों में जो आनंद है वही हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए और हमें वो करना है अगर हमें अपनी भक्ति में आगे निकलना है। ये 2 पॉइंट जो मुझे मेन समझ आया, मैंने पूरा नहीं पढ़ा माता जी, लेकिन जितना मुझे समझ आया, जितना मैंने पढ़ा, मुझे ये 2 पॉइंट उसमें सबसे ज्यादा आपने अच्छे पढ़ा लगे। या आपने सुना? नहीं जी, मैंने सुना, मैंने एक लेक्चर सुना, एक लेक्चर मेरा बाकी है अभी सुनना, तो मैंने जो सुना और फिर मैंने पढ़ा भी थोड़ा थोड़ा बीच में से, तो मुझे ये चीज समझ आई कि नहीं, हम जो स्ट्रगल करते हैं ना, कोशिश करते हैं नहीं नहीं ये कर लूं ऐसे कर लूं, वो नहीं है। अगर हमें मिल भी गया, अगर हमारी बहुत कोशिशों से, तो हमारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान ने हमारे जो कर्मास है, हमारा बैंक अकाउंट आप बार बार बोलते हो, खुद बनाया हुआ है, जितना उसमें है वो हमें मिलेगा ही। और अगर हम मदर नेचर को ना हिलाएं, ना उनको डिस्टर्ब करें, सब कुछ जो जिसके लिए है जैसे रखें, तो किसी के लिए कमी नहीं है। और यही एक तरीका है भगवान तक पहुंचने का, जो मेरे को समझ आया जी। ठीक है हर तो चीज का नियम है। या आपने प्रभु हाँ जी जी, का लेक्चर सुन लिया पूरा? मैंने प्रभु जी का लेक्चर अभी नहीं सुना माता जी, वो मैं सुनूंगी। सो हम एक्चुअली उसी लेक्चर की बात कर रहे हैं। जिन्होंने वो लेक्चर सुना है वो उसके बेस पर ये पॉइंट्स बता रहे हैं। आज वो आप लेक्चर जरूर सुनेंगे और जी मैं जरूर सुनूंगी और मैं यहाँ पे पॉइंट्स भी मुझे बनाऊंगी। रात तक भेज देना अपने ठीक दो। है जी, ठीक है जी, जरूर। हेमा मुझे वैसे माता जी मैं आपसे पूछ रही थी, जो मैंने समझा उसमें वो कुछ हद तक सही था ना माता जी? सही था, लेकिन अगर आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको और अच्छे से उसको ठीक है कनेक्ट जी, कर पाओगे, बिकॉज अभी आप ठीक है, हमारा सुनकर उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, बट यू हियर द लेक्चर। ठीक है। द आइडिया वाज टू हियर द लेक्चर। अच्छा, मैंने जो 2 जून को जो हमारी क्लास हुई, गीता क्लास, हमारा उसका सुन लेक्चर, के मैं। हमारा लेक्चर नहीं, ठीक है प्रभु जी, का लेक्चर। ठीक है जी, ठीक है जी माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरे Yeah. कृष्णा। हेमा। बहुत सारे पॉइंट्स तो अभी ऑलरेडी कवर्ड है, but still what I understood is Prabhuji said in that lecture that 8 months nature is working to give us rain, and जब भी वो रेन आती है we are not able to, इसको हम रिटेन नहीं कर पाते, वो पूरा ड्राउन हो जाता है पानी, यस। because we are not grazing our cows, जो उन्होंने बताया है, we are not, cows and land का कनेक्शन नहीं है। As यस। Srila Prabhupada says that land and cow are for economic development. अगर हम इसे मेंटेन करेंगे तो it is very easy, because everything which we grow from that land, that we all everything we give it to factories. Wheat आता है for biscuits, as Prabhuji said, tomatoes are for ketchup. So instead of using it natural way, we are giving it everything, like we are producing for factories.
Factory. फैक्ट्रीज से जो आ रहा है वो हम यूटिलाइज कर. Yes. And other point which I can connect with the verses and this lecture is that Krishna conscious devotees जो है, he accepts the bare necessities of life, making the best use of a bad bargain, and enjoys transcendental happiness in Krishna consciousness. That means here it is saying that, as Vinti Mataji says, that minimize the utilities. तो हमें नेसेसिटीज जो है हमारी नीड्स उसको मिनिमाइज करके हमें रहना है. एंड बैड बार्गेन मीन्स, अगर अभी आज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम बैड बार्गेन इज जो है उसी में ही अच्छा ढूंढे, वॉट एवर इज अवेलेबल टू ट्राई टू फाइंड इट. जैसे चातुर्मास फॉलो करना इज वन ऑफ द बैड बार्गेन, यू कैन से दैट जो है जिसके लिए रखो और हम भी खुद फॉलो करो, तो इट कम्स अंडर दैट. In this way we can reach to Krishna consciousness. Yeah, actually what he's trying to say is the bad bargain is कि हम इस शरीर में आ गए और इस पृथ्वी पे जन्म ले लिया हमने. That's the bad bargain. Because कुछ भी अच्छा नहीं है यहाँ पे, न शरीर में न पृथ्वी में. दोनों ही समय के साथ खत्म हो रहे हैं, डिटीरियोरेट हो रहे हैं, एज हो रहे हैं और फिनिश हो रहे हैं. So it's a bad bargain, है ना, क्योंकि हमें एक नश्वर बॉडी मिली है, एक फाइनाइट टाइम है हमारे पास. बट ही इज सेइंग मेक द मोस्ट ऑफ द बैड बार्गेन. मतलब अपना जितना भी टाइम है, बहुत लिमिटेड टाइम है हमारे पास, अगर आपने वो कृष्ण के लॉज के साथ कोऑपरेट करने में लगा दिया, देन यू हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग. फिर उसके बाद आपका शरीर अगर खत्म भी हो जाता है, you have made the best use of your time. So we have to be a cooperator. Laws already बने हुए हैं, इस दुनिया को चलाने के laws बने हुए हैं. The real economy is, as Prabhupada says, कृषि वाणिज्य, agriculture and vanaspati, है ना, and गौ रक्षा कृषि वाणिज्य, यही है real wealth. Milk products and vanaspati, all the fruits and vegetables and all the grains is what we are, and water is what we really need to live. Can our factories manufacture these? No. If they are finished or if they are in limited supply, will we be able to survive? No. Will our money be able to save us? No. Factories भी कब तक बिस्किट्स बनाएंगी? जब तक गाय का दूध अवेलेबल है, जब तक wheat उग रही है, तब जब तक पानी मिल रहा है, तभी तक तो फैक्ट्रीज बना सकती है ना हमारे लिए, नूडल्स, दिस दैट. जब ये वेल्थ खत्म हो जाएगी, कैन द फैक्ट्रीज क्रिएट दिस इन देयर लैब्स? नो. तो रियल वेल्थ क्या है? रियल वेल्थ इज काउज, लैंड, फर्टाइल लैंड एंड वाटर. सो इसके साथ कोऑपरेट करते हुए जिए. ऐसे प्रोडक्ट्स, अपनी प्रोडक्ट यूसेज मिनिमाइज करते, बिकॉज आप भी भागीदार हैं फिर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में, है ना. चाहे 1% है या 0.1% है या 0.001% है, लेकिन अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स मिनिमाइज कर देते हैं, इन सिंक विद नेचर कर देते हैं, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट हॉरिफाइंग greed and destruction that is being caused to our planet right now. And Krishna will notice that and he will protect you. Makes sense, है ना? There's a direct sense, the direct link between what we are eating and our karmic reactions. हम क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे बिजली को इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, कैसे गाय के लिए हम, गाँव प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या कैसे उसको यूज कर रहे हैं या नहीं यूज कर रहे हैं, कितनी हम हॉलीडेइंग कर रहे हैं, कितना हम air travel, everything, whatever we are using from this world is actually going to directly impact our happiness, because it's going to come back to us, है ना. Now you can realize कितना हमें संभल के चलना है, कितना ध्यान रखना है. It is not, there are no free lunches. हर चीज का अकाउंट लिया जा रहा है, हर चीज का अकाउंट. There are witnesses for everything. Video films बन रही है ना. So none of us can then later on claim, why me? We are not even aware हम कितने rules break कर रहे हैं, isn't it? Because हमने rules जानने की कोशिश ही नहीं की. चल रहा है, धूप आ रही है,
बारिश आ रही है, मैंगोज आ रहे हैं, खाने से मतलब रखो, हमें क्या लेना देना कैसे आ रहे हैं, चल रहा है, ठंडी हवा मिल रही है ना, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं ना, और हमें क्या लेना देना इसका रेपरकशन क्या है एनवायरमेंट पे। सो हम भी भोगी हैं, है ना, और हमें क्या बनना है, योगी, भोगी से योगी बनना है। ओके, अर्चना, अनु, भारती, वैशाली, हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? वनीता, इसका एक एग्जांपल एक है इको विलेज बॉम्बे में, basically, you know what, and which is getting a lot of attention from the world media also, which is very sustainable. So they have set up an example, and people should visit that to see, you know what, how they are contributing to the environment. Where in Bombay? It's somewhere, it's done by Radhanath Swami Maharaj. Yes. Yeah. Yeah. And somewhere around 100 kilometers away from Bombay, or 50-60 kilometers away from Bombay. It's in Wada. Where? Near Thane. Wada. Wada? Then it's in proper Bombay. Thane district. Yeah. Yeah. उसी तरह लोकनाथ स्वामी महाराज ने भी एक इको विलेज बनाया है। उसी तरह शिवराम, उन्होंने, लोकनाथ स्वामी महाराज ने शायद गुजरात में बनाया है, शिवराम स्वामी महाराज ने हंगरी में बनाया है, इंद्रदुम्न स्वामी महाराज ने पोलैंड में बनाया है। इस तरह से दिस वाज द नेक्स्ट फेज, दिस वाज द विजन ऑफ प्रभुपाद, मेक इको विलेजेस टू शो द वर्ल्ड, बिकॉज वो मानेंगे नहीं, वो बोलेंगे इट कांट बी डन, बिना इंडस्ट्रीज के इकोनॉमी नहीं चल सकती, लोग नहीं, अब नहीं करेंगे। उन्होंने कहा इनको करके दिखाओ, दे आर सो डल हेडेड एंड सो स्टबर्न कि ये मानेंगे नहीं, तो आप इसको बनाकर करके दिखाओ, जी के दिखाओ ऐसे, then they will come and see, and this is exactly what's happening. टूर्स होते हैं, इट्स कॉल्ड न्यू वृंदावन, शिवराम स्वामी महाराज का हंगरी में जो है टूर्स होते हैं, लोग भर भर के बस में बैठकर आते हैं देखने के लिए, ये कैसे जी रहे हैं, ये खुद उगाते हैं, जो उगाते हैं वही खा रहे हैं, बिजली नहीं है, जब शाम हो जाती है शाम के साथ ही ये अपनी दिनचर्या खत्म कर देते हैं, जो उगा रहे हैं वही पहले भोग लगाते हैं फिर खाते हैं, अपनी गाय है उन्हीं को चरा रहे हैं, उसी से दूध आ रहा है, उसी से सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दे आर शोइंग इट प्रैक्टिकली हाउ टू डू इट, इट्स पॉसिबल, एंड दिस इज नॉट विशफुल थिंकिंग, दिस इज नॉट ऑप्शनल कि जिसको पसंद है वो करे, बाकी जिसको नहीं करना है वो शहर में रहे, ऐसा नहीं है, because water is limited, everything is limited, so we cannot behave irresponsibly. So ये lecture इसलिए बहुत important है, practical tips हैं इसमें. You will be mindful now when you are making food choices, travel choices, gadget buying choices, है ना? If possible, hear the lecture again. Okay, YG has raised her hand. Oh, I raised mine, long back when you asked the question, but that's okay. I'll go. Just one thing, before I start. My uncle passed away yesterday, so if you can please pray for his soul, that would be, I would really all of us appreciate we can chant the Maha Mantra one time for your uncle. Meaning, what's the relation? My mother's sister's husband. Masad. Masaji, your Masaji. All right. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. the departed soul find a better destination, and may he be engaged in service in his settled body. Thank you, Mataji. I did send those 2 points to you so I think those 2 points have already been covered by everybody. I just wanted to add, just to add to those points only. One was, it was really sad to hear about this, how to what extent we have interfered with nature. So he was saying, right, cows are, giving birth every day, whereas that is not the time. There is a particular time frame when you're supposed to give birth and rest. But because of all these, genetic modification and everything, we are... Just breathe.
Yeah, exactly. So, it is like that. That's one example that was a little bit shocking, to what extent we are interfering with Krishna's plan. And that, the Krishna's plan is absolute and perfect. We have to just go with what has been provided with us. And again, the milk example, right? How it goes off to make biscuits, to the factories, or, ketchup. Somebody had already mentioned that. So this is one point. The other point is, in fact, when we started talking about the eco villages, I think towards the end of the discussion, they were actually saying, somebody was raising a question: why not, let's start all of this in a village, because it's already there. Because one point that they made was we should be close to a water body, then cows, and land. So now, we're all landlocked. So we should be in a place. So one suggestion that was actually made was, why can't we start it off from the villages? And then Krishna consciousness, everything can actually come from there rather than going from the cities. So that's why it was very heartening to hear that something like that is already happening, such as these eco villages. So I think those were the, one more point that I thought, it's like this, that I wanted to connect with this, 6 point, 2, 3 the verses, is talking about samadhi or a trance. So for me, my understanding is there is complete control of the senses here. The senses are used only for transcendental activities. Although we are living here, bare necessities, we have to take care of it, but we are not affected by it at all. As Emma pointed out, an accident or something does not affect us. So in the lecture, Prabhuji was actually talking about Varnashram. And he said real Varnashram is Deva Varnashram. So what is Deva Varnashram? Keeping Krishna in the center of all our activities. So I think that's, the ultimate stage of samadhi or trance. Very, Krishna. very nice points, YG. Thank you so much. Hare Krishna. Yes, it is Daivi Varnashram, not just Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, but Brahman working according to the rules of Krishna, Kshatriya working according to the rules of Krishna, Vaishya and Shudra working according to the rules of Krishna, keeping Krishna in the center for Krishna's satisfaction. That's a big, big difference. Right now, everything is working for our satisfaction. Hence, we are busy exploiting each other. And conflict is the result. But अगर हम सबकी लाइफ का केंद्र बिंदु कृष्ण बन जाए, हमारा आपसी कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों का गोल सेम है. In fact, in a lecture, I was hearing that the war that's happening between Russia and Ukraine, he said the ISKCON devotees of Russia are not fighting with the ISKCON devotees of Ukraine. जबकि ये दोनों countries एक दूसरे के साथ लड़ रही है ना? And दोनों countries के जो population है, वो भी they both are siding with their government. The Russians feel their government is right, Ukrainians feel their government is right. So वो भी आपस में एक दूसरे के friends नहीं है. But he said, what about ISKCON? ISKCON के जो Russian devotees हैं, they are all out helping the Russian, the Ukrainian devotees of ISKCON. Why is this so? So they are above country, caste, planet or anything because दोनों के केंद्र बिंदु कृष्ण है. उनका गोल एक है. So उनमें लड़ाई नहीं है ना? Even though they belong to different countries. So United Nations, Prabhupada बार-बार कहते थे, real United Nations is ISKCON. जो हर कंट्री में जाकर केंद्र बिंदु उनका कृष्ण बना देता है, तो किसी का किसी के साथ कोई आपसी मुठभेड़ नहीं रह जाता. All nationalities, all castes, all religions together live in ISKCON and cooperate with one another. और यही हमने दुनिया को भी बनाना है. We have to make ISKCON so big that the whole world lives in it. So सबका जो goal of life is Krishna. Everybody is talking the same language. How to please Krishna. Naturally हमारे आपसी conflict खत्म हो जाएंगे. And we will all start obeying the rules of Krishna. And in return what happens? All are happy. Everybody's needs are automatically fulfilled. Nature will provide. छीना झपटी नहीं करनी पड़ेगी. तेरी नदी, ये आधी नदी तेरी, आधी नदी मेरी, ये आधा पर्वत तेरा, बाकी का पर्वत मेरा. जरा सा इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया, सेंधा नमक का लाले पड़ जाते हैं. सेंधा नमक तो पाकिस्तान से ही आता है. ओह, अब वो आना बंद हो जाएगा, है ना? चाइना ने नदी का पानी रोक दिया तो हमारे यहाँ. All this is because
Krishna is not the center in our lives. Okay. Archana? Actually, sorry, Mataji, I have not done. I'm so sorry. But definitely we'll do tomorrow and we'll give that points tomorrow morning. Yes. Yeah. Yeah. Bharti? Vaishali? हरे कृष्णा। Hare Krishna. मैंने सुना, पूरा नहीं सुन पाई, मैं थोड़ा सुना मैंने, लेकिन वही थोड़ा बहुत यही रिकलेक्ट हुआ, थोड़ा बहुत यही रिकॉग्नाइज हुआ, समझो कि ये सीजन जो भी था, सीजन्स के बारे में भी उन्होंने बोला था। और कृष्णा को सेंटर में रख के करना है, काऊ को बचाना है, काऊ से हम बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। इस टॉपिक को छोड़ के थोड़ा 1 मिनट बोलना चाहूंगी। एक बार हम लोग बाहर गए थे, वहां पे एक डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, तो उनके पास काफी सारे गायें थी। गाय इतनी अच्छी है बोले अपने लिए, वहां पे वो दवाई बनाते हैं, वहां से बना के सिटी में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो वहां से छोड़ना नहीं चाहते जगह। बोले मैं बहुत कुछ सिटी में आके कर सकता हूँ, लेकिन सिटी में आ गया तो मेरी गायों को कौन देखेगा, गाय यहाँ पे नहीं रख पाऊंगा, और गाय शुड बी द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी। तो उनको बचाने के लिए वो गांव में रहते हैं, वहीं पे दवाई बनाते हैं, दवाई बेचते भी हैं। वो पैसा उनके लिए जरूरी नहीं है, पैसा कमाना जरूरी नहीं है, बोले ये दवाई लोगों तक पहुंचे यही काफी है। और गाय के दूध से, गाय गोमूत्र गोमय सभी कुछ इतना फल देता है, सभी कुछ उपयोगी है, यूजफुल है। तो इसके लिए गाय को बचाना बहुत जरूरी है। ये मुझे मतलब उनका जब लेक्चर सुन रही थी तब याद आया कि वो भी डॉक्टर ऐसे ही इसी रोड पे चल, मतलब ऐसा नहीं है वो स्पिरिचुअल करके नहीं है वो, लेकिन वो ऐसी सेवा कर रहे हैं लोगों की। Yeah. See, हाँ if he's following Ayurveda, हाँ he's following Veda. यस Well, there is a Veda even in Ayurveda. यस He's also living according to the rules of Krishna without knowing it, but at least he's following. यस करेक्ट करेक्ट। वो ही वहां पे वैसे उनका लैंड भी है, उनका खुद सब्जी उगाते हैं। वहां पे जो भी लोग विजिट करेंगे उनको वो ही सब्जियां, वो ही ग्रेन खाने को मिलता है, वीट है उनका खुद का। वो बोले यहाँ पे जो भी आएगा वो भूखा नहीं जाएगा, इतना तो मैं देख के जाता हूँ। साथ में दवाइयां भी, वो इतना अच्छा लगा वहां पे देख के कि अपने बच्चे जैसा संभालते हैं। अभी गायों की भी बहुत सारे छोटे छोटे क्या बोलते हैं, बिछिया और बछड़े, हाँ वो सब थे, वो उनको भी बहुत अच्छे से संभालते। उनके बच्चे भी, उनके नाती पोती भी वो ही काम कर रहे हैं। तो थोड़ा डेडिकेटेड टुवर्ड्स सर्विस टू ह्यूमन, ऐसा बोल सकते हैं। Very nice. और देखो उन्होंने preaching भी कर दी, अपनी next generation को भी ये सिखा हाँ दी। हाँ हाँ बिल्कुल। Practically doing this. This is also हाँ, very big responsibility जो उन्होंने निभाई। और ये आसान नहीं है ऐसा लाइफ जीना। मतलब बच्चों को भी ऐसा नहीं लगता कि हम शहर जाके ये सब करें वो सब करें, ऐसा ही उन्होंने खुद को बनाया। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब एक बार तो विजिट फिर से करना चाहूंगी मैं। बहुत अच्छा लगा। Very nice. Where was this? पुणे में ही है, तळेगांव के पास कहीं पे। Okay. Yes, and अच्छा, तो ये प्रभु जी का भी, ये मैंने जो सुना ये थोड़ी देर ही मैं सुन पाई। थोड़ा मतलब मेरा भी थोड़ा लेग का प्रॉब्लम है, प्लास्टर लगा हुआ है, मैं ज्यादा देर बैठ नहीं पा रही हूँ। तो हाँ, तो थोड़ी देर सुन के मैं फिर से सो जाती हूँ, वो थोड़ी दिक्कत हो रही है। okay. तो सीजन्स अकॉर्डिंग टू हिज प्लान इतने अच्छे से किए हुए हैं कृष्णा ने कि हमने उसमें अपना रूटीन सेट करना चाहिए, ना कि हम डिस्टर्ब करें। नहीं तो फिर अगर सीजन डिस्टर्ब हो गए तो पूरा का पूरा लाइफस्टाइल हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। ये एक समझ आया, काऊ को सेंटर रखना है, ये भी समझ आया, और कृष्णा तो है ही वो भी सेंटर में, लेकिन मैं ज्यादा देर सुन नहीं पाई हूँ तो मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगी। Finish करिएगा उसको। हाँ हाँ हाँ। Please finish the lecture. 1 week is a good enough time. हाँ हाँ And you can see from this example of that Ayurvedic ashram के
कितने सेल्फ सफिशिएंट हैं जो अपना खाना खुद उगाते हैं. हाँ Inflation, demonetization will not touch them because they will बिल्कुल. always have food. और इससे भी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि मेरे घर में जो आएगा वो भी कभी भूखा नहीं जाएगा. So he's the हाँ richest person. He's तो the richest person. कॉन्टामिनेशन कहीं भी नहीं है, उनका सब कुछ प्योर मिल रहा है उनको, और वो दे भी रहे हैं दूसरों को प्योर. Yeah, and तो पैसे की जरूरत ही कहाँ है? If हाँ. you have enough water, if you have enough milk and milk products, and you have हम्म. enough food, what do you need the money for? Yes. You need little money. So you don't have to go to work in factories or have your own businesses and work hard like crazy. Right, right. Yes. No, I was saying, while listening to this, it suits our ears actually, but practically, but when it comes to practical thinking, no, it has, as Vaishali says, difficulties बहुत सारी है, and these days में सबको easy and आराम चाहिए. Nobody is like really from heart. Nobody want to take that pain. Yeah, as of now, हमारे भी एक गौशाला है जिसमें 10-12 cows रह सकते हैं. Cow shed है बनी हुई, but it's empty because घर ही बंद है. तो जब खेती होती थी तब ये सब चीजें काम आती थी. Now there is no cow, the cow shed is empty, and there are so many things attached to that. जैसे अगर गांव में आज जो लड़के रह रहे, even they wish to live there, but no girl is ready to get married to them. जो अभी शहरी जो लड़कियां हैं, they don't want गांव वाला लड़का. Work. Yeah. And go and work there. So both the sides are there. Yes, we have moved towards an easy life, easier life. In fact, too easy. And इतना easy हो गया कि हम और व्यस्त हो गए. टाइम ही नहीं है. ना हमें पानी भर के लाना पड़ता है कहीं से, ना हमें खेत में चारा डालने जाना है या गाय को चारा डालने जाना है, गाय को नहलाने जाना है, ना हमें खेत जोतना है. फिर भी हम बिजी हैं. कितने बिजी हमारे पास समय नहीं है. पहले का जो रूटीन था वो बहुत अच्छा था मुझे लगता है. मतलब लेडीज का काम फिक्स था, जो भी करते थे. जैसे आपने बोला, पानी लाना भी नहीं पड़ता है, ये सब कुछ पुरानी औरतें किया करती थी. उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती थी उनके टाइम में, विद इन दैट टाइम वो काम फिनिश भी करती थी. घर का खाना अच्छे से प्योर मिल जाता था. वो रूटीन फिर से शुरू होना चाहिए. So we should be mindful of our shopping basket and our shopping trolley, keeping all these things in mind. The whole idea was कि हम इसमें से practical changes अपनी life में लाएं. It's nice to discuss and say, oh, the yesteryears were very nice, but good for them. I will continue to live the way I want. That's not the point of this discussion. Let's make a change in our life from today itself on how we shop, how we eat, how we holiday. Okay, because this is having a huge impact on the environment and on our karmic cycle. अगर environment की नहीं भी है इतनी चिंता, तो अपनी karmic cycle की तो सबको चिंता होनी चाहिए, because it's going to come back. It's going to come back to us. Okay. So yes, thank you very much. Coming to 6.25 that Anjali was saying is very difficult for her to understand. I realized when I was reading the purport that you don't... Excuse me, Hare Krishna. I was not talking about 25. 20 to 23. Not 25. Right. 20 to 23, sorry. So I realized that you don't really have to, go into the details of the high philosophy that has been mentioned here. It'll come to you with time. इसीलिए मैंने last time भी इसका जो final paragraph है वो ही ले लिया था, because that's the conclusion of this whole 2 pages. You don't really have to understand those pages. It's a little tough. लेकिन जैसे जैसे आप भागवतम पढ़ रहे हैं और boiling the milk शुरू हो जाएगा तो ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ आ जाएंगी. Right now you don't really have to sweat so much about it. ठीक है? And I think we did till 26. हाँ, एक बार इसकी रिकॉर्डिंग में 26 अनुष्का को कह देना, नंबर डाल दे. सिर्फ 2 लिखा है, 26 नहीं लिखा है ना, तो वो 26 कर देगी. एंड नाउ वी हैव टू रीड 27. सो वाईजी, कैन यू हेल्प अस विद दैट?
Sure. प्रशानमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्. The yogi whose mind is fixed on me verily attains the highest perfection of transcendental happiness. He is beyond the mode of passion. He realizes his qualitative identity with the Supreme, and thus he is freed from all reactions to past deeds. Okay, here is a formula. How to get rid of all your past karmic reactions. Brahma Bhut is the state of being free from material contamination and situated in the transcendental service of the Lord. Mad bhaktim labhate param. One cannot remain in the quality of Brahman, the Absolute, until one's mind is fixed on the lotus feet of the Lord. Savai manah Krishna padaravindayoho. To be always engaged in the transcendental loving service of the Lord, or to remain in Krishna consciousness, means to be factually liberated from the mode of passion and all material contamination. So, prashanta manasam hiyena. Here, what Prabhupada is trying to say is that the yogi whose mind is fixed on me, he attains the highest perfection of transcendental happiness. He is beyond the mode of passion. मतलब रजोगुण उसको touch नहीं कर सकता जो who is engaged in the service of Krishna. And he is beyond the mode of passion. He realizes his qualitative identity with the Supreme. And therefore, he is freed from all reactions to his past deeds. So, why does Prabhupada say chant and be happy? As you chant, you are getting rid of all your past karmic backlog. So, should we chant more or less? The more you chant, the more backlog you are getting rid of. So, ज़्यादा chant करने में ही बुद्धिमता है, उसी में अकलमंदी है, isn't it? Because we don't know हमारा backlog कितना है. जाहिर है बहुत है, क्योंकि सतयुग से हम आ रहे हैं नीचे, है ना? कितने लाख years सतयुग के निकल गए, फिर भी हम वापस नहीं गए. फिर त्रेता युग आ गया, फिर भी हम वापस नहीं गए. फिर द्वापर आ गया, कृष्ण आए, we were there on the planet. फिर भी हम वापस नहीं गए और अब कलयुग आ गया है. सो यू कैन इमेजिन इतने युगों से हमें चांसेस मिलते रहे हैं ऑफ गोइंग बैक होम बैक टू गॉड और हम नहीं गए वापस. तो हमारा कितना कार्मिक बैकलॉग होगा. बट इट कैन बी वॉश्ड ऑफ लाइक दिस सिंपली बाय chanting, because chanting means keeping it is the transcendental loving service of Krishna. मतलब ये सुनने में सिर्फ नहीं है वर्ड कि वो ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस मींस व्हाट. उसके लिए कुछ प्रैक्टिकली करना है. एंड व्हाट इज दैट? चैंटिंग. चैंटिंग हिज नेम्स, चैंटिंग ऑन द बीड्स, फॉलोइंग द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. सो इसलिए ये जो प्रशांत मनसाम ही है ना, प्रशांत मींस not being dragged into thinking of anything other than Krishna. And by the attainment of this stage, upaiti shanta rajasam. Matlab, rajasam matlab rajogun. And we are always agitated. Rajogun mein jo hai, wo hamesha agitation mein. More. I want to enjoy more. I want to enjoy my senses more. But by the practice of this yoga, which is bhakti yoga, which is karma yoga, which is Krishna consciousness, this kind of a rajasic mentality gets stopped. This hankering, और चाहिए. Okay, ये तो अब खा लिया, ये तो पी लिया, अब और चाहिए. So I remember when I was looking for maids, one maid came and told me that where I'm working there, they are now saying कि कुछ, they are so agitated by their taste buds, they're saying कुछ तड़कता भड़कता खिलाया करो हमें रोज. We don't want to eat the regular food. How can I invent, an exotic dish every day? Some days I have to cook, the regular food. So what I'm saying is that people's taste buds have reached such a level
that nourishing, wholesome food is not able to satisfy them anymore. They're looking for more exotic food, more exotic food. और इसलिए वो पीड़ित हैं. This is a kind of unhappiness because you're not satisfied. और आप घाट रेस्टोरेंट भटक रहे हो, to satisfy your taste buds जो अब इतने ज़्यादा उत्तेजित हो गए. This gets stopped by practicing Krishna consciousness. This agitation of Rajogun gets stopped by the practice of Bhakti Yoga. Upaiti Shanta Rajasam Brahma Bhutam Akalmasham. मतलब then you become Aham Brahmasmi. मतलब मैं ये शरीर नहीं हूँ. मैं क्यों इस शरीर को इतना चमकाने में, खिलाने पिलाने में फिर लगा हुआ? I am a soul. अंदर I am a spirit soul और मेरी भूख एक्चुअली कृष्ण के लिए है. मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ और इसलिए मैं दूसरी चीजें खाने और पीने के पीछे भाग रहा हूँ, होपिंग कि इससे मेरी भूख शांत हो जाएगी. नहीं होगी. इनर मोस्ट हमारा जो नीड है इस समय, दैट इज वी आर हैंकरिंग फॉर कृष्णा. भूल गए हैं. वी डोंट नो इट. जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे भूख लगी है, बता नहीं पा रहा है, समझ भी नहीं पा रहा है, रोता रहता है. He doesn't understand कि मुझे प्यास लगी है या मुझे भूख लगी है, but उसको इतना पता है मुझे कुछ हो रहा है. I need something, and so he starts crying because he's not able to express it. Same is the situation with us. हम बड़े तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमें समझ नहीं आ रही है कि हमारी एक्चुअली भूख है. हम अपनी माँ से बिछड़ गए हैं, अपने पिता से बिछड़ गए हैं, और हमें रह के उनकी याद आ रही है. And we want to go back, but we are not able to remember it or understand it. तो हम इसलिए अपनी इस भूख को सेटिस्फाई करने के लिए आर्टिफिशियल मीन्स और तौर तरीकों में फंस गए हैं. हाउ कैन आई ईट मोर, हाउ कैन आई ड्रिंक बेटर, हाउ कैन आई स्लीप ऑन अ बेटर बेड, ट्रैवल बेटर. फिर भी आफ्टर डूइंग ऑल दिस वी आर एग्जॉस्टेड, बैंक बैलेंस इज ऑल्सो एग्जॉस्टेड, और भूख फिर भी नहीं मिटी. Once that becomes old, we say, oh, वो तो पुरानी बात हो गई, now what next? So can you see our agitated mind? हम actually तड़प रहे हैं. So without any deviation, we should be firmly situated in Aham Brahmasmi, that I am a spirit soul. Akalmasham, I am the soul, I am not this body. So therefore this yoga is a process for settling down the mind. इसलिए इतनी rules और regulations हैं, क्योंकि ये बिना रूल और रेगुलेशन के बांधा नहीं जाएगा. इट्स अ वाइल्ड हॉर्स. इसको बांधना पड़ेगा. इतने सारे डूज एंड डोंट्स हैं. क्यों? ताकि इफ यू फॉलो देम रेगुलरली, दिस माइंड की नाक में नकेल डाल सकते हो. उसके बाद व्हाट यू टेल द माइंड लेफ्ट, तो वो लेफ्ट मुड़ेगा. यू टेल द माइंड राइट, तो वो राइट मुड़ेगा. इस समय वो हमको नचा रहा है और इसलिए हम दुखी हैं. तो उसे कंट्रोल में करना है. ओके, नेक्स्ट. युञ्जन् एवां सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् अश्नुते. Thus, the self-controlled yogi, constantly engaged in yoga practice, becomes free from all material contamination and achieves the highest state of perfect happiness in transcendental loving service to the Lord. Yeah. So self-realization means, Prabhupada is saying, what is self-realization? It means knowing your constitutional position in relationship to the Supreme. भागवतम में हम कर रहे थे ना, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन. संबंध मतलब पहले तो मेरा रिश्ता क्या है इस दुनिया के साथ, क्यों आई मैं यहाँ पे, दैट इज संबंध. देन अभिधेय, तरीका क्या है उस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने का. एंड देन प्रयोजन, गोल क्या है. चलो मैंने समझ लिया कि मैं कौन हूँ, ये भी समझ लिया मेरा रिलेशनशिप क्या, गोल क्या है, टू गो बैक, टू गेट आउट ऑफ हियर, है ना. सो दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन, टू नो संबंध, टू नो अभिधेय एंड टू नो प्रयोजन. इसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं. सेल्फ रियलाइजेशन कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सोटिक सी चीज नहीं है कि आंखें बंद करके आपको कुछ तांडव करना है. You have to go into some realm
and get some exotic experience, chant some exotic mantras, and then you will get into some experience. That's not what is self-realization. It simply means work. Self-realization is that you have to do some practical work to control yourself, जो कि सबसे मुश्किल काम है, इसीलिए कोई ये करना नहीं चाहता। हमें क्या सिखाया जा रहा है? बी फ्री, नो नीड टू फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो मन में आए करो, जैसा मन में आए करो। ओके, so self-realization means knowing one's constitutional position in relationship to the Supreme. The individual soul is a part and parcel of Krishna, and his position is to render service to Krishna. This contact with Krishna is called Brahma Sparsha. Brahma Sparshanam Anyantam Sukham Ashnute. The highest Sukham, happiness, is attained जब आप कृष्ण के साथ संबंध बना लेते हैं ना। So a self-controlled yogi, again self-control के ऊपर what is the word? Self-control के ऊपर stress कर रहे हैं कृष्णा, that a self-controlled yogi who is engaged in yoga practice constantly, not only in summer vacation or winter vacation, constantly, not chutti wale din, he becomes free from all material contamination. Such a person becomes free. Such a person शुद्ध हो जाता है। जो जितना अपने मन को संयम में डाल देगा वो उतना शुद्ध हो जाएगा और वो उतना एलिजिबल हो जाएगा टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। सिंपल सी बात। The more you are able to control your senses, the more you are getting rid of your karmic bank balance, the more you are getting eligible to go back home, back to Godhead. Your relationship with Krishna is becoming stronger. And he achieves the highest stage of happiness in loving service to the Lord. Clear? इतना ही करते हैं. I'll show you the PPTs for this. Any questions meanwhile? मेरा था शाखा माता जी, दिव्य इंद्रियां मेरे को समझ नहीं है। दिव्य इंद्रियों का उसमें एक मेंशन था। दिव्य इंद्रियों का मेंशन है? अच्छा, कहाँ पे? 20 से 23 वाला था। Yes. ये जो मैंने इसमें से पढ़ा था, मेरे पास हिंदी वाला है as it is। अच्छा, आप हिंदी वाला पढ़ रहे हैं, ओके। इसमें ये आया था कि पतंजलि का एक श्लोक है जिसमें उनके सिद्धांत के अनुसार दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। पतंजलि द्वारा इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया। तो मुझे ये था जैसे सूक्ष्म इंद्रियां, जैसे मन, बुद्धि, अहंकार तो हम समझते हैं, तो दिव्य इंद्रियां क्या है? Yeah, there is an acceptance of transcendental pleasure in the Patanjali system. But the monists do not accept this. The duality of knowledge and the knower is not accepted. But in this verse, transcendental pleasure, realized through transcendental senses, is accepted. And this is corroborated by Patanjali Muni, the famous exponent of the yoga system. This great sage declares in his Yoga Sutras that Purusharth Shunyanam Gunanam Prati Rashavah Kaivalyam Swarupa Pratishtha Va Chitti Shakti Riti. So this Chitti Shakti or internal potency is transcendental. ये है दिव्य का क्या मतलब है? चित्ती शक्ति, है ना? यही है ना आगे हिंदी में? हाँ, आगे यही है ना? So अंतरंगा शक्ति, दिव्य शक्ति. Yes, so Purusharth means
जो इंटरनल पोटेंसी है भगवान की, इंटरनल पोटेंसी मतलब स्पिरिचुअल पोटेंसी जो है, स्पिरिचुअल, ये एक्सटर्नल पोटेंसी क्या है, ये दुनिया उनकी एक्सटर्नल पोटेंसी से बनी हुई है। ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये भगवान की अंदरूनी पोटेंसी से नहीं बना हुआ। अंदरूनी पोटेंसी से तो राधा रानी प्रकट हुई, बलराम प्रकट हुए, है ना, सारे भक्त प्रकट हुए। लेकिन जो कि एक्सटर्नल पोटेंसी है, उससे ये this dirty material world was created by his external potency, है ना। और इसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। एट द एंड द अटेम्प्ट टू बिकम वन, क्या पुरुषार्थ है? रिलीजियोसिटी मतलब धर्म कर्म कांड फॉलो करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रोजी रोटी कमाना, पैसे कमाना, सेंस ग्रेटिफिकेशन फिर उसको भोगना, है ना, टू इंडल्ज इन ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, एंड एट द एंड टू अटेम्प्ट टू बिकम वन विद द सुप्रीम मोक्ष। तो ये चार काम बनाए हुए थे कि चलो जिसको एकदम से अगर इस दुनिया में डाल दिया सबको और फिर भोग की चीजें दिखा दी और बताए भोग मत करो, भोग मत करो, डोंट एंजॉय, डोंट ईट, डोंट, मानते नहीं है लोग, और यह मुश्किल है। तो उसके लिए ग्रेजुअली उनको एक कंट्रोल सिखाने के लिए उन्होंने क्या कहा, क्या बनाया कृष्ण ने, दिस पुरुषार्थ। मतलब ठीक है, आप पहले कर्मकांड भी करो, जप तप करो, दान करो, उसके बाद रोजी रोटी कमाने के लिए थोड़ा परिश्रम करो, देन फिर कंट्रोल्ड भोग करो, खाओ पियो, भोग लगा के खाओ, घूमने फिरने जाओ, जो भी है, शादी कर लो टू एंजॉय सेक्स, बट एवरीथिंग इन अ कंट्रोल्ड वे। एंड देन फाइनली जब ये सब कुछ भोग लोगे, उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास ले लो, देन यू कम टू मोक्ष। सो इट वाज ग्रेजुअली फॉर टू हेल्प देम कंट्रोल देयर सेंसेस इन अ ग्रेजुअल वे। भोग सब लो, है ना, ईटिंग स्लीपिंग सेक्स एंड मेटिंग एंड डिफेंडिंग, सब कुछ कर लो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप सारी चीजें कर लो, लेकिन इसको इन अ कंट्रोल्ड वे करो ताकि इसको एंड में जाकर छोड़ सको। इसी को पुरुषार्थ बोलते हैं। बट this is again the external potency of Krishna. You don't need to do all this. In Krishna consciousness, you just jump over all of this. You don't need to do all of this. एक और मेरा वो था कि जितने भी ये संत हैं जो आते हैं धरती पे जन्म लेते हैं, उनका तो पिछला पूर्व जो भी है, जो भी उनके संस्कार होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे कम, बट व्हाट आई मतलब मुझे थोड़ा सा वो है कि एक तो समझ में आता है दे कम फॉर आवर सर्वेशन। इज देयर एनी अदर रीजन? नो, इसीलिए हम उनका ऋण नहीं चुका सकते। That they come into this dirty world without any karmic bank balance, only on the instructions of Krishna. Go help them, go help your lost brothers and sisters. ये मेरे कहने पे तो नहीं आ रहे, क्योंकि हम कृष्ण की बात नहीं मान रहे, तो वो अपने बड़े दूसरे बेटे को भेजते हैं, जरा जा अपने भाई को बुला। इसलिए हम उनका ऋण नहीं उतार सकते। They are pure, they have no karmic bank balance, and it's a dirty job, still they do it. Why? Because they are sold out to Krishna. Whatever you say Krishna, I'll do. मेरे लिए tough है, easy है, I'm not going to look at that. I will do whatever your wish is my command. इसीलिए वैष्णव का हम ऋण नहीं चुका सकते। बार बार इनको प्रणाम करना चाहिए, बार बार, और ऐसे वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, इन संतों की हमें सेवा करनी चाहिए। Clear? Thank you. All right. So here I share my screen just for a recap of what we've done so far. 20 to 23 हमने कर लिए थे, ये correct? अभी आपने जो डिस्कस किया कि ये अष्टांग योगा इज बेस्ड ऑन द पतंजलि योगा सिस्टम, है ना, जिसमें आप क्या करते हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एंड समाधि। ये सब इजीली डन है जस्ट बाय फॉलोइंग अ कृष्ण कॉन्शियस लाइफ। यू डोंट हैव टू गेट इनटू दिस डिफिकल्ट प्रोसेस। सो ये हमने कर लिया था ऑलरेडी 20 to 23। श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेनेशन ऑफ पतंजलि योग सूत्र, जो आप मुझे पूछ भी रही थी अभी, पुरुषार्थ शून्यम गुणानाम, मतलब पुरुषार्थ मीन्स जो हमने अभी
डिस्क्राइब किया मटीरियल रिलीजियोसिटी, कर्मकांड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड एट द एंड द अटेम्प्ट टू बिकम वन विद हिम। ये पतंजलि के सूत्र थे। सो हमारी जितनी भी योगा प्रैक्टिसेस हैं, अभी जितने तरह के योगा हैं, मोर और लेस सब पतंजलि पे ही बेस्ड है, सब पतंजलि से बोरो किए हुए। अपना नाम चाहे उसके ऊपर उन्होंने स्टैम्प कर दिया हो, लेकिन सोर्स इज पतंजलि। एंड चित्ती शक्ति इज द इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। करेक्ट? कैवल्यम क्या है? कैवल्यम मतलब देयर इज नो गॉड, मैं ही भगवान हूं, भगवान ही मुझ में है, मैं ही उसमें हूं, हम दोनों एक हैं। दैट्स कैवल्यम। दैट इज फॉर मायावादीज, मोनिस्ट्स, कि उनका गोल क्या है कि मैं भगवान में जाके मिल जाऊं। वैष्णव के लिए ये दिस इज लाइक पॉइजन, वो भगवान में मिलना नहीं चाहते, है ना। पतंजलि भी कैवल्यम ही सिखा रहा है। पतंजलि क्या कहता है? कैवल्यम इज एन इंटरनल पोटेंसी by which the living entity becomes aware of his position. लेकिन भक्ति योगा is चेतो दर्पण मार्जनम, मतलब I want to clean my dirty heart of the mind and my heart by realizing my pure identity. वो क्या कहते हैं? मैं भगवान में मिलना नहीं चाहता, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। मैं भगवान की बराबरी कभी कर ही नहीं सकता, मैं उनका सेवक बन के ही खुश हूँ या खुश रहना चाहता हूँ। I don't want to merge in him, because if I merge in him, I can't serve him. So just a minute, huh? I have to go. All right. So the other references that support Kaivalyam, they are Swarupena Vyavasthitaha. Srimad Bhagavatam में इसका mention है, to realize your constitutional position as an eternal servant. Liberation does not mean destruction of the original eternal position. Nirvana also means the same. And Vedant Sutra में आनंदमयो भास्यात्, मतलब ये जो अंजलि तुम कह रही थी ना, बहुत डिफिकल्ट पार्ट जो है, ये उसकी पीपीटी बनी हुई है उन 2 पेजेस की। हाँ जी। This is what it is. The ultimate goal of yoga is the natural transcendental pleasure of devotional service, which is easily achieved by bhakti yoga. This is Anandamaya Bhasya. है ना? So what are they saying here? एक तो है पतंजलि सूत्र और एक है भक्ति योगा. Patanjali sutras are more or less talking about oneness with the Supreme Lord, but higher than that is the philosophy of Bhakti Yoga. Why? Because in Bhakti Yoga we realize that my position is that of an eternal servant.
और भक्ति योगा में लिबरेशन का मतलब ये नहीं है कि अब मेरा अस्तित्व मिट गया और मैं भगवान में मिल गया, मतलब अब मेरा इंडिविजुअलिटी खत्म, यू नो, आई एम नथिंग, आई एम जस्ट लिक्विड mixed in this higher liquid. No, that's not what it means. Our identity, our individuality will always remain. Krishna says that to Arjun. You know that never before, ये जितने लोग तुम देख रहे हो अभी रणभूमि में, ये पहले भी थे, आज हैं और कल भी रहेंगे. इनकी इंडिविजुअलिटी कभी खत्म नहीं होने वाली. मैं इनको मार दूंगा लेकिन इनकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी रहेगी. सिमिलरली तुम भी, तुम्हें याद नहीं है अपने प्रीवियस बर्थ्स, लेकिन मुझे याद है तुम पहले एक इंडिविजुअल एंटिटी थे, आज हो कल भी रहोगे. सो व्हेन यू बिकम लिबरेटेड, योर इंडिविजुअल आइडेंटिटी डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड. कैवल्यम इस बात को मानता है, मतलब कैवल्यम इस बात को इस फिलॉसफी पे चलता है. So Kaivalyam says that आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है. Yeah, कैवल्यम is a form of, ये साइड का चीज इसको कैसे बिटा, how should I remove this? This is what is the Patanjali Sutra. This is Srila Prabhupada's explanation of the Patanjali Yoga Sutra. 20 से 23 में यही बताया गया कि जो मायावादीज हैं, they follow कैवल्यम. So such people may again fall down. कोई गारंटी नहीं है that they will, once they are relieved from this terrible material world, तो दोबारा भी आ सकते हैं, क्योंकि सेवा में नहीं लगे, सिर्फ ब्रह्म ज्योति में वैक्यूम में बैठे हुए हैं. How long can you stay in vacuum? Because a soul is active by nature. He needs some activity to do. So they get bored after a while. यही लोग नीचे आ जाते हैं and they, you know, become famous as very, very big philanthropists. बहुत जिन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, चैरिटी के, बड़े बड़े अनाथ आश्रम खोले, स्कूल खोले, हॉस्पिटल खोले. ये वो लोग हैं जो इतनी स्ट्रगल करके, इतनी मेहनत करके निकल गए थे इस दुनिया से, लेकिन ब्रह्मज्योति तक ही गए और दोबारा यहाँ आ गए, फिर आ गए. तो इतनी मेहनत का फायदा नहीं हुआ ना. वनिता, ये कैवल्यम जो है दैट इज मर्जिंग विद द एब्सोल्यूट ट्रूथ, राइट? कैवल्यम का मतलब ये है ना? यस. और हम जब भगवद गीता भागवतम की क्लास पढ़ रहे थे, उसमें मर्जिंग विद द एब्सोल्यूट ट्रूथ का उन्होंने एक और वर्ड दिया था, सायुज्य. तो very similar, you're right, very similar. Yes, and therefore we don't like it. Therefore devotees feel this is poison. I don't want to merge with him, I want to serve him. पर राधा रानी ये कभी नहीं कहती कि मैं कृष्ण के बराबर हो जाऊं. She and all the gopis and all the gopas, Nand Maharaj, Yashoda Mai, they are all the time, you know, running and looking for what can I do for Krishna. उसी में उनको, they are synonyms, right? Both the words are synonyms. Yes, they are. Yes, you're right. Good. What is the word? You were able to remember that and connect it with observation. Good observation. एक और word. The way you connected the two. Good, very good. So these are the methods to attain Yogarudh stage. उत्साह, निश्चयात, धैर्य किया था ना हमने. 6.24 patience, determination. याद है वो स्पैरो और गरुड़ का की स्टोरी सुनाई थी प्रभुपाद ने पर्पॉट में. जो याद है सबको? यस, नो? ओशन है वो स्पैरो के अंडे. yes. और स्पैरो की ऐसी डिटर्मिनेशन कि मैं तुझे सुखा दूंगी, तुझे पी जाऊंगी. इमेजिन. Okay, so patience, determination. Then 6.24 verse में ये बता रहा है without deviation. That's nishchaya. Nothing will distract you from your goal. Then faith. You need faith for confidence, and so that, and also to have great perseverance, especially when
things are difficult in our life. So you need faith, then you need control. Your mind and your senses should be under your control, or at least your lifestyle has changed in such a way that you are at all times trying to control your mind and senses. Not that your lifestyle is making you come more and more under the control of your senses and mind. Then give up all material desires born of mental concoction. मतलब शास्त्र केवल और केवल शास्त्र के हिसाब से चलो, बाकी सारा स्पेक्युलेटिव propaganda which comes on internet, mobile, WhatsApp, books by all kinds of atheistic authors, everything else is mental concoction. If it is not coming from Shastra, give it up. Intelligence sustained by full conviction and mind fixed in oneself, not thinking about anything else. These are the step-by-step processes by which one achieves success. For sure, you will attain the yoga root stage. This is yoga. So ये हमने स्टोरी की थी गरुड़ और स्पैरो की. ध्यान योगा. Principle क्या है इसका? The principle behind this practice is that one should practice with great determination because God helps those who help themselves. और ये हमने किया था उत्साह निश्चयात धैर्य, रूप गोस्वामी का उपदेशामृत में से. तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत शतोवृत्ति सद्भीर भक्ति प्रसिद्ध्यति. One can execute this process of bhakti yoga successfully. Don't think कि कलयुग में हम कर नहीं पाएंगे. You can do it successfully with full-hearted enthusiasm, perseverance, and determination. Just by following your prescribed duties in the association of devotees and by engaging completely in activities of goodness. सत्व गुण में आ जाओगे, easy हो जाएगा. रजो और तमो में पड़े रहोगे, बहुत मुश्किल होगा. So सत्व गुण में आ जाओ, अपना खाना पीना, लाइफस्टाइल सत्व गुण की तरफ ले आओ, सत्व गुण के हिसाब से एडजस्ट कर दो, हमेशा डिवोटीज के एसोसिएशन में रहो, keep following the prescribed duties and you will be successful. Then we did pratyahar, matlab you gradually stop or decrease your sense activities. And samadhi हमने देखा था, samadhi मतलब how to control the mind. samadhi का मतलब है अपने माइंड को किसी एक जगह पे फोकस करते हैं, उसी को समाधि कहते हैं ना, इस चंद्र बिंदु, इस एक look at this point and keep focusing on this point. So they are basically trying to help you focus your mind. How to achieve it? One can come to the stage again by controlling your senses. And by conviction means faith, and meditation means bhakti yoga. So how do you understand आपको समाधि लग गई है? There will be no longer any danger of being engaged in material conception of life. One should not think about sense gratification. And one should think of no pleasure aside from the pleasure of the Supreme Self. अगर ये इस तरह के symptoms आपके लाइफ में आ जाएंगे, मतलब आपकी you are moving towards samadhi. Again, see, the main control, the culprit of our lives, of our dukh, of our unhappiness is our mind. It is इसके दो बहुत अच्छे गुण हैं. It is flickering, मतलब ये बदलता रहता है, आज ये कल वो, नहीं ये नहीं, अब वो नहीं, अब ये. And it is unsteady, मतलब इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता. Imagine, और हमने अपनी लाइफ इसको सौंप दी है, इसके हिसाब से चलते हैं. So mind will fly away in the beginning, but you should not give up hope. Bring it back. उड़ेगा, फिर से खींच के लेकर आओ, बांधो उसको हरि नाम से. Then from a godas you will become a goswami. Godas मतलब इस माइंड का दास.
जो इसने नचाया, जैसे इसने नचाया आप नाचे, लेकिन अगर आप वो स्वामी बन गए, आप इसको नचाओगे. Okay? Krishna consciousness is the highest perfection of yoga practice. Then, this is what we did today. What is Brahma Bhoot platform? It is freedom from material nature and sinful reactions. और अगर आपको पुराने सारा आपका लोन माफ हो गया, अगर किसी ने आके कह दिया जितने आपने पाप किए सब 0 हो गए, what will be the result? Transcendental happiness. कुछ नहीं, आप किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर. ये जगत की सारी हैप्पीनेस आपको फीकी लगेगी. And such a person realizes that the self is one with the Supreme. मैं भगवान का हूँ. Okay, this is Brahma Bhoot platform. But this is all not Bhakti Yoga. This is Kaivalya. How can one become fixed in the quality of Brahman? One should fix one's mind on the lotus feet of the Lord. Example is Savai Manaha Krishna Padara Vindayor. मतलब इनके ऊपर फोकस करना. ये जो परमात्मा बैठे हुए हैं, 4-handed form of Vishnu, इसके ऊपर full focus should be on him. Then you will be able to attain liberation. अब इसका counterpart क्या है? भक्ति, कृष्ण कॉन्शियसनेस. कृष्ण कॉन्शियस करोगे तब भी यही सब चीजें मिलेंगी, लेकिन और भी एक चीज मिलेगी उसके साथ. Two benefits of always engaging in loving services: to become liberated from the modes of passion. रजोगुण से एक तो liberation मिल जाएगी, और दूसरा freedom from all material contamination. मन और mind बिल्कुल शुद्ध और clean हो जाएगा. So Krishna consciousness gives you two more benefits in addition to this Brahma Bhoot platform. Did we do 28 today? Yes. Anji, 27 and 20. ध्यान योग ही चल रहा है. कृष्णा भी ध्यान योग बता रहे हैं, बट प्रभुपाद उसका साथ साथ कंपैरिजन करते जा रहे हैं भक्ति योगा के साथ, बिकॉज कृष्णा इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस भक्ति योगा लेटर. अभी तो लोअर लेवल्स ऑफ योगा बता रहे हैं अर्जुन को. अर्जुन ये भी कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो. So now he is explaining about Brahma Sparsha platform, matlab self-realization. How one achieves full perfection and bliss by being in constant touch with the Supreme, and thus he engages in the loving service of the Lord. Constantly 24 घंटे जो इस परमात्मा फॉर्म के ऊपर मेडिटेट कर रहा है, naturally at one point he will want to serve him. So self-realization कैसे define की है इस verse में? It is defined as knowing your औकात. Constitutional position मतलब आपकी क्या औकात है, इसको जानना ही self-realization. In relationship with the Supreme, भगवान के connection में हमारी क्या position है, इस understanding को self-realization बोलते हैं. क्या है हमारी position भगवान के relationship में? We are his part. Eternal Survivor, eternal survivor. Yes, not eternal. Eternal तो है, but हम उनके part and parcel हैं. We are not equal to him. We are his part and parcel, but tiny part. He is huge. जैसे I was reading in Bhagwatam, eternal को हिंदी में क्या बोलते हैं? शाश्वत. हाँ? शाश्वत. अध्यात्म. आध्यात्मिक. याद करके बताती हूँ. So self realization मतलब हमारी आइडेंटिटी, हमारी औकात क्या है कि हम उनके पार्ट एंड पार्सल. हमारी पोजीशन क्या है? उनकी सेवा करना. कभी भी हम ना सोचें कि मैं भी एंजॉय कर लूं उनके बराबर. वो रास कर रहे हैं, मुझे भी रास करना है. वो यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो पी रहे हैं,
मैं भी जाऊंगा और यही करूंगा, ये खाऊंगा वो पीऊंगा, यहाँ जाऊंगा उनके साथ खेलूंगा। हमारी पोजीशन इज जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। एंड व्हाट इज ब्रह्म स्पर्श? द कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम इज ब्रह्म स्पर्श। जैसे ये सेज कर रहे हैं, ये ब्रह्म स्पर्श स्टेज में है। डायरेक्टली ही इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस ब्रह्मन हियर, दिस four-handed form of Vishnu. This is कारण गर्भोदक्षाय विष्णु एंड Shirodakshaya. क्षीरोदक्षाय विष्णु। सो ये कौन से विष्णु हुए? I think this is Shirodakshaya Vishnu, right? नो, यस, कारणोदक्षाय विष्णु जो पहले आते हैं, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु जो the creator. मोशन में है। दुनिया को बनाया, हाँ, है ना? क्षीरोदक्षाय विष्णु। ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाय विष्णु से ही बने, उनके गर्भ से आए ना ये। एंड क्षीरोदक्षाय विष्णु इज जो सबके हार्ट में जाकर बैठ गए। तभी तो वो बॉडी, ये बॉडी हमारी क्यों चल रही है? क्योंकि अंदर क्षीरोदक्षाय विष्णु विराजमान है। नॉट श्योर क्षीरोदक्षाय या गर्भोदक्षाय वो है, तभी हमारी बॉडी चल फिर रही है। अदरवाइज हमारा सोल अकेला इस बॉडी को नहीं चला सकता, सुपर सोल साथ में है। Okay, and 29th is later. So you all can, click pictures of this. 28, 27, उसकी भी आप picture ले लो. And then you can. And 26. All this is Dhyan Yoga. The nature of the mind. 25. These are the methods to attain Yoga Road stage. 24. How to attain this Yoga Road stage. Okay. And here we go. We started from here. ठीक है? Any questions? So ध्यान योग है, ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं, सुनिए। Till we come to Bhakti Yoga is in the middle. Remember, the most precious thing is always put in the middle. शुरू में he talks about ज्ञान योग, ध्यान योग. Later on he talks about something I can't remember. And in the middle he talks about Bhakti Yoga. The most precious part of a sandwich is always the middle. डाला क्या आपने सैंडविच में? स्वाद उसी का होता है. So Bhakti Yoga, he's going to start talking from chapter 7, where he directly talk about, devotional service. But ज्ञान योगा, ध्यान योगा, कर्म योगा, उन्होंने जो ladder के steps बताए हैं, Prabhupada has very, very intelligently, constantly compared Bhakti Yoga with all these other steps, first step, second step, so that you can, by the time you come to actual Bhakti Yoga, you have a very clear picture of the two. Okay? So, thank you very much for your attention and your time. Oh God, 1.5 घंटा हो गया. You can stop the recording.